औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Dear second year students, good morning and assalamu alaikum. It's chapter 12 of your second year text, that is about current and electricity. In today's lecture, we will discuss thermistors, thermocouple, resistance thermometers, their functions in day-to-day life or their applications. प्यारे तलबा, आज के इस लेक्चर में हम थर्मिस्टर्स, थर्मोकपल्स, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स के फंक्शंस और डेली लाइफ में एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, come to thermistor. What thermistors are? Thermistors are the semiconductor devices whose resistance changes quickly with temperature. The semiconductor devices whose resistance changes rapidly, sharply with temperature are called thermistors. Thermistors mostly semiconductor डिवाइस से बने होते हैं और उसकी खूबी ये होती है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के चेंज के साथ एब्रप्टली राइज होता है, एब्रप्टली चेंज होता है। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ थर्मिस्टर्स। Semiconductor ceramics made from the mixture of metallic oxides of manganese, iron, nickel, cobalt and copper. ये सेमीकंडक्टर सिरामिक्स है जो कि मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट और कॉपर से बने होते हैं। यानी ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट और कॉपर से बने होते हैं। कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। द वर्ड थर्मिस्टर is composed of two parts. One is therm and the other is ester. Meaning, therms mean temperature or heat, ester means resistor. So, the word thermistor is the composition of two parts, therms which means temperature, ester which means a resistor. थर्मिस्टर दो अल्फाज से बना है जिनमें एक जो होता है थर्म है और दूसरा जो है एस्टर है। थर्म्स टेम्परेचर के लिए, एस्टर रेजिस्टर के लिए। They are heated and pressed into desired shape, mostly in the form of rods or discs or beads and baked at high temperature.
they are heated and pressed into desired shape, mostly in the form of rods or disc or beads, and then baked at high temperature. थर्मिस्टर जो होते हैं इसको गर्म किया जाता है और मखसूस अशकाल में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दारा जाता है। रॉड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिस्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बीड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको फिर हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, पकाया जाता है। What are the main characteristics of thermistor? Number one, abrupt change in resistance take place with rising temperature. Quick change in resistance take place with the rising temperature, with increasing temperature. थर्मिस्टर की एक खूबी ये है कि थोड़ी सी टेम्परेचर की चेंज से रेजिस्टेंस में क्विक चेंज आता है। दूसरी खूबी क्या है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ऑफ थर्मिस्टर इज वेरी हाई। अल्फा you have studied delta R divided by R naught delta T, fractional change in resistance per degree rise in temperature. So fractional change in resistance per degree rise in temperature is very high, So the temperature coefficient of resistance alpha for thermistor is very high. Third, temperature coefficient of resistance alpha of thermistor can be either positive or negative, which we have studied before. For example, if it is made of metallic things, Ohm's resistance increases with temperature, then alpha will be positive. If it is made of semiconducting material, Ohm's resistance decreases with increasing temperature, alpha will be negative. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती हैं थर्मिस्टर की, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव उन चीज़ों के लिए होगी जिसका टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, और नेगेटिव उन चीज़ों के लिए होगी जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम अल्फा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। Most thermistors are found with the negative temperature coefficient of resistance. अक्सर थर्मिस्टर जो होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ पाए जाते हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, तो उसका टेम्परेचर जब आप राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस गिरता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस से जब आप नेगेटिव आएगा तो इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, NTC, और पॉजिटिव को PTC कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। Thermistors with a high negative temperature coefficients are very accurate for measuring temperature, typically up to 10 Kelvin, which is minus 263 degree centigrade. यानी ऐसे थर्मिस्टर जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव हाई होता है, उसके ज़रिए से हम एक्यूरेटली अप टू 10K तक का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू माइनस 263 degree centigrade. The high resistance at low temperature enables more accurate measurement. The high resistance at low temperature enables more accurate measurement. लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बहुत हाई हो तो उसकी एक्यूरेसी को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, फर्दरमोर
they can be used as a safeguard to control quick current fluctuations in electrical circuits. इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको सेफ गार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि करंट में जो फ्लक्चुएशन या चेंजेस आती हैं उसको उसके ज़रिए से कंट्रोल किया जा सके. सो दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन टू कंट्रोल क्विक करंट फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्विक करंट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये देखो, ये डिस्क फॉर्म में है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थर्मिस्टर्स हैं. ये देखो, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये थर्मिस्टर्स हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है. अगर ये थर्मिस्टर ना होता और करंट डायरेक्टली हीटिंग कॉइल में आती तो ये पॉसिबल था कि ये हीटिंग कॉइल जल जाते मोर करंट आने से. अब जब आपने थर्मिस्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो लो टेम्परेचर और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है. तो इधर से जब करंट जाता है तो ये करंट इधर आके जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो इधर करंट स्लोली आता है क्या, फिलामेंट्स के अंदर. करंट इज कमिंग स्लोली विदाउट डैमेजिंग द फिलामेंट. और जो ये हीट अप होता है तो करंट की मकदार आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है और इस तरह हीटिंग फिलामेंट जो है वो बर्निंग से क्या होती हैं, सेफ रहती है. ये आपके पास क्या है, थर्मिस्टर है, जो कि क्या करता है, इन फिलामेंट को करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता इब्तिदा में कम, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, ताकि डायरेक्टली इसमें ज़्यादा करंट ना आए और ये जलने से महफूज रहे और ये बर्दाश्त कर सके. ये है आपके पास क्या है, थर्मिस्टर का रोल. इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, थर्मिस्टर है, इब्तिदा में इसका टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है. जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इधर फिलामेंट में करंट कम आएगी और जब करंट कम आएगी तो फिलामेंट क्या होंगे, सेफ होंगे, जलेंगे नहीं. अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये हीटअप होता है तो उसकी रेजिस्टेंस गिरती जाती हैं और जब रेजिस्टेंस गिरती जाती हैं तो फिर क्या कर लेता है, करंट बढ़ती जाती है. ये याद रहे कि ये सेमीकंडक्टिंग है, तो सेमीकंडक्टर्स की खूबी ये होती है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होती है. सो अ थर्मिस्टर is used including in a circuit a thermistor is included in a circuit to supply electricity to the heater without damage it. Thermistor is included in a circuit to supply electricity to heater without any damage. ये थर्मिस्टर को इसलिए लगाया जाता है सर्किट में ताकि जिस कंपोनेंट में बिजली आपने भेजनी होती है वो डैमेज होने से बच जाए. अगर ज़्यादा करंट उसमें फ़्लो करें तो वो डैमेज होने से क्या हो जाए, बच जाए. थर्मिस्टर कंट्रोलिंग करंट उसको देता है, भेजता रहता है. एट लो टेम्परेचर अ थर्मिस्टर हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हेंस एलोज स्मॉल करंट टू द हीटर. ये जो आप ऊपर हमने बयान किया सारा, लो टेम्परेचर पे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होती हैं और स्मॉल करंट इब्तिदा में भेजते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम द थर्मिस्टर हीट्स अप एंड इट्स रेजिस्टेंस ड्रॉप्स डाउन एंड एलोज लार्ज करंट्स टू द हीटर. जो वक्त के साथ साथ थर्मिस्टर गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती हैं और करंट की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और इस तरह हीटिंग कॉइल में करंट की मकदार ज़्यादा जाती हैं और हीटिंग कॉइल जो है वो इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते. What are the applications of thermistor? Applications क्या हैं? They are used as temperature sensors. They change temperature into electrical voltage signal, which are duly processed. They change temperature changes into electrical signals. Change temperature into electrical signals. into electrical voltage which are duly processed, जिसको फिर प्रोसेस किया जाता है.
टेम्परेचर को सेंस करते हैं। जिस तरह आपकी जिस्म से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, सेंसर लगा होता है, डिटेक्ट किया जाता है, तो आपको आवाज़ आ जाती है, कभी साउंड की फॉर्म में, कभी डिजिट्स के फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में कि बंदा अंदर आ गया है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल temperature sensors. So temperature sensors can be used for fire alarm in the household buildings. ये जो temperature sensors हैं households और उसमें इस्तेमाल होती हैं। ऑन ऑफ के लिए वो होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर जब होता है, फ़र्ज़ करें आपका जो 40 डिग्री तक टेम्परेचर हो रूम के अंदर, तो वो खामोश रहता है। जो ही 40 से टेम्परेचर आग लग जाती, कोई और चीज़ हो जाती, 40 से फ़र्ज़ करें इंक्रीज़ कर जाता है, तो फिर जो है वो ऑन हो जाता है और वो चलाना शुरू कर देता है। फायर अलार्म जो है वो आवाज़ देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है बाखबर हो जाते हैं लोग कि आग लगी हुई हैं। सो modern communication application, for example modern communication appliances, for example mobile phones, computer, LCD display, rechargeable batteries, refrigerator, freezer, washing machine, cloth dryer, oven, toaster, thermostat, air conditioner, medical and patient monitoring system all include thermistors. आज का जो मॉडर्न दौर इलेक्ट्रॉनिक का है, इनमें थर्मिस्टर का इस्तेमाल बाकसरत पाया जाता है। मोबाइल के अंदर, एलसीडी के अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट्स को, मुख्तलिफ़ हिस्सों को बचाने के लिए और करंट को उसमें कंट्रोल रखने के लिए क्या किया जाता है, थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए टेम्परेचर सेंसर्स, एज ए सेफ गार्ड एंड मैनी मोर पर्पसेस, बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले अ शॉर्ट वीडियो अबाउट थर्मिस्टर्स, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू द साइट्स हु आर प्रोवाइडिंग यू गुड एजुकेशन। तो आ जाए हम देखते हैं कि थर्मिस्टर क्या है और किस तरह फंक्शन करता है, देख लो। Hi folks, I'm going to talk about a little electrical component for measuring temperature called a thermistor. I originally needed it for measuring the water temperature in a set of experiments, determining if cold water boils faster than hot. But just for fun, I also got it to turn on this PC fan when the heat was too high. What's a thermistor? A thermistor is usually a ceramic or polymer material with two wires connected to it. The key is that the thermistor's resistance changes with temperature. With some, the resistance increases as the temperature increases. Those are called positive temperature coefficient or PTC thermistors. With others, the resistance decreases as the temperature increases. Those are called negative temperature coefficient or NTC thermistors. I couldn't find a thermistor locally, but some quick research turned up that automobile coolant temperature sensors are just thermistors in a protective case, which was a good thing since that saved me having to make a case of my own. With this one, there's only one obvious place to connect to, this threaded part. So where do the two thermistor wires go inside? Well, one goes to the threaded part, and the other goes to the brass case. So I wrapped one wire tightly around the case, and after attaching a ring terminal to a wire, and finding suitable nuts, I attached another wire to the threaded part. I then connected up a meter, and put it on the resistance scale. Remember, the resistance changes with the temperature. I put my fingers on the probe part, and it started to heat up. Sure enough, the resistance on the meter started to decrease as the temperature increased. So it contains an NTC, or a negative temperature coefficient thermistor. To be useful, I needed to know what resistance matches what temperature. Unfortunately, I couldn't find a resistance to temperature table for this particular one, so I had to make my own. To do that, I prepared a tall container, this soda can with all the paint sanded off. I filled it with water and put the probe part of the sensor in the water. I also put in my kitchen thermometer. The long length of my thermometer is why I went with a tall container. For my purposes, I needed to know the resistance to temperature values for temperatures near the freezing point of water. So I put the whole thing in my freezer until the thermometer read near 0 Celsius, or 32 Fahrenheit. Then I took it out, connected my meter to measure resistance, and put it on my stove heating element. I then started recording the resistance on the meter and the corresponding temperature on the thermometer as the stove element heated up the water. I stopped once it reached boiling, which is 100 or 212 Fahrenheit. And here's the chart drawn using the data from my table.
As you can see, the resistance decreases as the temperature increases. You can also see that it's a curve. The whole reason I'd gone through this process was to do some experiments to determine if cold water boiled faster than hot water, as some people think it does, and to find out why that myth might exist. That resulted in this graph of water temperature as it was heated up over time. But that's a whole other topic, which I cover in another video I'll point out later. Here's the fun I had making a PC fan turn on when the thermistor gets too hot. First, here's the circuit without the thermistor. It's very simple. The positive from my homemade power supply goes to the positive of the fan, and the negative of the fan goes back to the power supply. When I turn on the power supply, the fan starts spinning. Now here it is with the thermistor. The positive from the power supply goes to one end of the thermistor. The other end of the thermistor goes to the positive of the PC fan, and the negative of the PC fan goes back to the power supply. But this time when I turn on the power supply, the fan doesn't start spinning. That's because the thermistor is nice and cool at room temperature, and so it has a high resistance. The fan needs a certain amount of electrical current going through it in order to spin. But the higher the resistance in the thermistor, the lower the current is going through the fan, and the resistance of the thermistor is high enough to make that current too low. Now I use this hairdryer to heat up the thermistor. That causes the thermistor's resistance to decrease. As it decreases, the current increases. And when the current's high enough, the fan starts spinning. Notice that the fan is blowing on the thermistor, making it cool off more quickly. Here I'm showing the airflow direction using this tissue paper. As the thermistor cools, its resistance increases, and that causes the current going through the fan to decrease. After a minute or so, the current is too low to keep the fan spinning, so it stops. Well, thanks for watching. See my YouTube. Okay, तो आपने देख लिया कि किस तरह जो है थर्मिस्टर फंक्शन करता है, यानी किस तरह थर्मिस्टर का काम होता है। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं थर्मोकपल्स की तरफ कि थर्मोकपल क्या है। थर्मिस्टर को हमने डिस्कस कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्मोकपल्स। व्हाट अ थर्मोकपल इज। Thermocouple, the device used to measure the temperature of a body, is called thermocouple. Couple means two, therms mean temperature. So the device that is used to measure the temperature of a wire is called thermocouple. Couple wires are being used to measure a temperature, that's why it is called thermocouple. थर्मोकपल एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए से हम किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल इज मेड ऑफ टू वायर्स ऑफ डिसिमिलर मेटल्स joined together at both ends. थर्मोकपल दो डिसिमिलर मेटल से जिसका अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। The temperature measuring end called hot junction is placed at hot boiling water, and the reference end called cold junction is placed in ice. जिस एंड का टेम्परेचर मेजर करना होता है वो हॉट साइड पे होता है, और एक होता है रेफरेंस जंक्शन। रेफरेंस जंक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, जो कि फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। So the temperature measuring end called hot junction is placed in hot boiling water, and the reference end called cold junction is placed in ice. Reference end जिसके साथ क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, रेफर किया जाता है, वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। Therefore, the thermocouple measure the unknown temperature of hot body with reference to the known temperature of a cold body, जिस तरह हमने कहा। टेम्परेचर को मेजर करता है रेफरेंस टू अ कोल्ड बॉडी, अ कोल्ड जंक्शन। सो द थर्मोकपल
measure the unknown temperature of a hot body relative to the cold junction. So the thermocouple metallic wires are mostly composed of noble metals, for example platinum, iridium, silver, osmium, and gold, or base metal like copper, iron, nickel, copper alloy, and lead and zinc. देखो थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल के जो मेटालिक वायर्स हैं ये मोस्टली नोबल मेटल से बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्लेटिनियम, इरिडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, गोल्ड और बेस मेटल्स होते हैं, या ये बेस मेटल से बने होते हैं लाइक कॉपर, आयरन, और लाइक कॉपर, आयरन, निकल, कॉपर, एलॉय, लेड एंड जिंक, ये होता है। तो थर्मोकपल या तो मेटालिक वायर से होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड से बने होते हैं, या मेटल, ये बेस मेटल से बने होते हैं। क्या होते हैं? बेस मेटल से, लाइक कॉपर वगैरह जो होते हैं इससे बने होते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द फंक्शन of thermocouple is based on 3 effects discovered by Seebeck, Pelcher and Thomson. थर्मोकपल के फंक्शन जो है वो 3 इफेक्ट्स पे मुश्तमिल हैं, जिसको डिस्कवर किया सीबेक, पेल्टियर एंड थॉमसन, तीनों ने। We are coming to Seebeck effect. What a Seebeck effect is? When two dissimilar metals are joined together at 2 junctions, an electromotive force is generated between the 2 junctions because of temperature difference between the 2 junctions. When two dissimilar metals, dissimilar metal, एक कॉपर है, दूसरा क्या है, गोल्ड है, एक कॉपर है, दूसरा आयरन है, dissimilar metals उसको कहते हैं। When two dissimilar metals are joined together at 2 junctions, 2 जंक्शन, एक कोल्ड जंक्शन, एक हॉट जंक्शन पे होते हैं, an electromotive force is generated between the 2 junctions. EMF पैदा होती है, वोल्टेज पैदा होती है, because of the temperature difference between the 2 junctions. Because of the temperature difference between the 2 junctions. This effect is called Seebeck effect. यानी 2 डिसिमिलर, एक कॉपर है, एक आयरन है, एक एंड को आपने कोल्ड में डाल दिया, दूसरे को आपने हॉट में डाल दिया, तो उन दोनों की डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज पैदा होती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सीबेक इफेक्ट कहते हैं। द वोल्टेज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन इन थर्मिस्टर्स इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। The amount of thermo EMF generated is different for different combinations of the metals. ये जो है, अगर आप डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स करते हैं तो उसके लिए जो वोल्टेज जनरेशन है या जो EMF है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। The current flowing in the circuit due to this effect is called thermoelectric current. यानी इसमें जो वोल्टेज पैदा होती हैं इसको थर्मो EMF कहते हैं, और उस थर्मो EMF की वजह से जो सर्किट में करंट बहती हैं उस करंट को थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सीबेक इफेक्ट इज रिवर्सिबल, इसको उल्टा किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। इफ द वायर जंक्शंस आर रिवर्स्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आल्सो रिवर्स। यानी जो जंक्शन हार्ट में था अगर आप उसको कोल्ड में लाएं और जो कोल्ड में था उसको हार्ट में ले जाएं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स। ये तो सीबेक इफेक्ट क्या है वो आपने देख लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 जंक्शन से वोल्टेज पैदा होती है, वो सीबेक इफेक्ट कहलाता है।
थर्मोकपल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अ थर्मोकपल कॉन्फ़िगरेशन इज मेड ऑफ 2 डिसिमिलर मेटल्स, आयरन एंड कॉपर इज शोन इन फिगर। ये जो है 2 डिसिमिलर मेटल, देखो ये कॉपर वायर है, ये देखो ये कॉपर का वो जंक्शन है, ये देखो ये जो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है ये कॉपर है, और ये जो रेड नज़र आ रहा है ये आयरन है। तो ये देखो एक जंक्शन इधर है, ये देखो ये देखो ये देखो आप देख रहे हैं रेफरेंस जंक्शन, ये देखो ये आपके पास क्या है, दैट इज़ अ रेफरेंस जंक्शन। और ये जो है आपके पास जो है वो जंक्शन है जहाँ पर टेम्परेचर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है किसी बॉडी का, ये हार्ट जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट जंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। ये कांस्टेंटाइन वायर है, ये बेसिकली सर्किट की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल है। ये देखो ये आपके पास क्या है, ये देखो ये आयरन है, और ये देखो ये क्या है आपके पास वोल्टेज वो लगाओ, ये कॉपर है, ये कॉपर है। ठीक है ना। वन इज़ आयरन एंड द अदर इज़ कॉपर। तो आप देख रहे हैं कि ये रेफरेंस जंक्शन है, ये देखो कॉपर भी इधर है, आयरन भी इधर है, तो ये रेफरेंस जंक्शन है। और इधर अगर आप देख लें, ये देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अननोन टेम्परेचर को मेजर करने वाला जंक्शन है। सो thermocouple configuration is made of 2 dissimilar metals, iron, copper, that is shown in the figure. The unknown temperature of a hard junction with respect to fixed reference junction can be found with thermocouple. ये देखो ये हार्ड जंक्शन है, इसका टेम्परेचर हम इसके लिहाज से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एक कांस्टेंटाइन वायर इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट। ये देखो ये कांस्टेंटाइन वायर है, दैट इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट। The temperature difference between the two junction, hard junction and cold junction, generates thermo EMF between the junctions. Thus thermal energy is converted into electrical energy. Thermal energy को electrical energy में convert किया जाता है। इधर देखो वोल्ट मीटर लगाया जाता है जो कि वोल्टेज शो करता है, और वो चेंजेबल है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज जब हार्ड जंक्शन को आप गर्म करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से थर्मो EMF भी चेंज होता रहता है। द थर्मो EMF इज़ वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। जो थर्मो EMF जनरेट होता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से, वो इन मिलीवोल्ट्स होता है। द थर्मो EMF डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ हार्ड जंक्शन इन इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन। जो थर्मो EMF हैं वो independent of the reference junction, which we call a cold junction, and depends upon the temperature of the hot junction. Thermo EMF is a function of hot junction is, it's not a linear function. तो थर्मो EMF जो है E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ अल्फा बी टी स्क्वायर प्लस सो आर दैट इज़, अगर आप जो E जो है EMF के लिए स्टैंड करता है, T जो है टेम्परेचर के लिए स्टैंड करता है। हार्ड जंक्शन के लिहाज से जो थर्मो EMF जनरेट होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो उसका रिलेशन क्या है, ये है E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, जबकि अल्फा और बीटा जो है कांस्टेंट है, और उसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स। यानी अल्फा और बीटा जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल्स पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द मेटल्स पे डिपेंड करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, और इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स, के मेटल्स क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसमें आपको पता है एनर्जी बैंड वगैरह सारों का पता होगा। अब हम आते हैं वेरिएशन ऑफ थर्मो EMF विद टेम्परेचर। कैसे थर्मो EMF इन thermocouple, the temperature of the measuring junction, hard junction, varies and the temperature of reference junction is same. thermocouples में टेम्परेचर ऑफ हार्ड जंक्शन जो होता है वो वेरी करता है, जबकि रेफरेंस जंक्शन का टेम्परेचर यानी कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। देखो
When the temperature of hot junction rises with respect to the cold junction, an EMF also increases with it up to certain limit of temperature, and it is plotted. So EMF, thermo EMF is plotted against temperature. जब प्लॉट किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये देखो, the temperature at which the thermo EMF becomes maximum is called neutral temperature. ये देखो, ये thermo EMF है, ये कर्सर को देखिए, ये टेम्परेचर है, बढ़ता जाता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो thermo EMF बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है तो thermo EMF बढ़ रहा है, और ये देखो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। तो जब वो टेम्परेचर जिस पे ये thermo EMF मैक्सिमम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे EMF मैक्सिमम हो जाता है इसको न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच द थर्मो EMF becomes maximum is called neutral temperature. For a particular thermocouple, this temperature is constant. If thermocouple is made of certain material, for that it is constant. But if it is made of different metals, then for that it is constant, but different from the other one. It is different for different thermocouples because of the nature of the material. So neutral temperature depends upon the nature of the metals and independent of the temperature of the cold junction. ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर है ये डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन की टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये न्यूट्रल टेम्परेचर मैक्सिमम, फिर इसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है, और जब गिरना शुरू हो जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है जिस पे ये ज़ीरो हो जाता है इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी उल्टा हो गया। सो डिक्रीज इन थर्मो EMF स्टार्ट्स विद राइजिंग टेम्परेचर बियॉन्ड न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंटर स्टूडेंट्स टिल इट रीचेज अ जीरो वैल्यू। यानी मैक्सिमम पे पहुंच गया फिर गिरना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है जो कि आपके टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, आपके लेवल से बहुत ऊपर है, फर्मी एनर्जी लेवल्स वगैरह ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और एक टेम्परेचर पे ये दोबारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह ये ज़ीरो हो जाता है थर्मो EMF, और उस टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द थर्मो EMF बिकम ज़ीरो इज़ कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, जो कि यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। सो आपने देखा कि जब EMF बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रही है तो EMF बढ़ रही है, हद तक कि मैक्सिमम पे पहुंच जाए, और ये टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाएगा। इसके बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो EMF गिरना शुरू हो जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है विच इज़ नॉट ऑफ योर लेवल। इसको हम तो आप सिर्फ ये मेंशन कर लो कि कुछ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से EMF जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि EMF मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाती हैं, और वो टेम्परेचर जिस पे EMF दोबारा ज़ीरो हो जाती है इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। देखो, अब आ जाओ देख लो कि थर्मोकपल क्या है और किस तरह काम करता है। आपको यूट्यूब का, गूगल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी अच्छी वीडियोस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली हैं। आप में यही आदत डालनी है कि आप उसको देखते जाओ। लेट्स सी हाउ डज थर्मोकपल वर्क्स। A typical thermocouple looks something like this. It usually comes with a handheld temperature probe or even a multimeter. They are also built into these solid cases for a much more rugged design. Thermocouples are very quick and easy to use. By simply plugging the probe into the measurement device, in this case a cheap multimeter, and selecting the temperature setting, we can get an accurate temperature reading in no time at all.
and this will work for many applications. With a thermocouple, we connect two different metals together at one end, and the other ends connect into a terminal block. Then we use a voltmeter to read the voltage difference between the two. The voltage here will be very, very small. When we connect the thermocouple to a multimeter and then apply heat to the junction, we can see it will generate a voltage. As you can see in this example, we're able to generate a very small voltage using a flame. And once we remove the heat, the voltage diminishes. Thermocouples are available in different temperature ranges. These are shown by a letter which indicates their rated temperature range. The most common type is K. This is a very general purpose version. Each letter uses a different combination of materials. This will give us a different temperature reading and allows different temperature ranges. If we held a metal rod in our hand and place the other end into a flame, we know the rod will heat up, and this heat will travel along the length of the rod to our hand. We can see this by using a thermal imaging camera. Notice the thermal energy travels along the length of the copper wire away from the heat source. What's happening here is the heat is exciting the atoms and molecules which form the material structure. The heat causes the molecules and the atoms to vibrate. This vibration is so tiny you would not be able to feel it with your hand. The excited atoms will allow their free electrons to move more easily, and they will move towards the cooler end of the rod. This only occurs because there is a temperature gradient, a difference in temperature from one end to the other. So, at the cooler end, we'll have slightly more electrons than at the hotter end. And as electrons are negatively charged, we therefore get a slightly negative and slightly positive charged ends of the rod. Voltage is like pressure. We're measuring the difference or potential difference between 2 points. If you imagine a pressurized water pipe, we can see the pressure using a pressure gauge. The pressure reading is comparing 2 different points also. The pressure inside the pipe compared to the atmospheric pressure outside the pipe. When the tank is empty, the gauge will read 0 because it has nothing to compare. Both are now the same pressure. The same with voltage. We are comparing the difference from one point to another. If we read across a 1.5 volt battery, we get a reading of 1.5 volts. But if we try to measure the same side, we wouldn't read any voltage because there is no difference. We can only measure the difference between 2 different points. By the way, we have also covered how a battery works in detail in our previous video. Do check that out, links can be found in the video description down below. Coming back to the thermocouple, if we connected 2 wires together of the same material, let's say they were both copper, and we then applied heat to the end to create a temperature difference, then the electrons would scatter and build up at the cold ends. However, they would build up in equal amounts in each wire, because they are the same material. So both wires will conduct heat equally and the temperature gradient will be the same. Therefore, our voltmeter wouldn't be able to measure any difference. However, if we connected 2 wires which were made of different materials, say one was made from copper and the other one was made from iron, then the 2 metals will conduct heat differently, so the temperature gradient will be different. That means the electron buildup at the cold ends will be different. And so we can connect a voltmeter to this and read a voltage difference. To make this into a useful tool, we just calibrate it by testing the device against known temperatures and marking down the voltages generated. Then we simply use a formula to calculate the temperature from the voltage measured. For this to work best, we should submerge the cold junction into an ice bath. That way we get a voltage with a reference relative to 0 degrees Celsius. Remember I said about the pressure in the pipe and how we are comparing it against the atmospheric pressure outside? That's because we know the pressure outside the pipe is atmospheric pressure. So, for the voltage reading to be accurate, we need to measure against something we know. So we use ice water because we know this temperature is a constant 0 degrees Celsius. This method is used in many science labs. However, as you can probably tell, it isn't very practical for most engineering applications. So instead, to improve the accuracy,
We leave the cold connections at equal ambient temperatures, and then we compensate for the difference by measuring the temperature of the connection and applying a formula to offset the error. To measure the temperature of the connection, we often use an RTD temperature sensor, which we'll look at next. RTD stands for Resistance Temperature Detector. This is also a fairly simple design. It's probably easier to understand than the thermocouple. They usually come in these different designs for engineering applications with a rugged casing. How do these work? Well, we know that electricity is the flow of electrons in a circuit. We have covered how electricity works in detail in our previous videos. Do check that out. Links can be found in the video description down below. When we pass electricity through a material, let's say a copper wire, the material will have some resistance to the flow of electrons, and we can measure this resistance with a multimeter. Different materials will have different resistance levels. For example, this 1 meter length of copper wire shows a very low resistance of just 0.2 ohms. But this 1 meter length of nickel chrome wire shows a very high resistance of 22.1 ohms. The temperature of the material will change the resistance of the material. Most conductors will increase in resistance the hotter they get. That's typical of metals. For example, this copper wire shows a resistance of 0.1 ohms at ambient temperature. But when heated with a flame, it increases up to 0.9 ohms. This occurs because as the atoms and the molecules become excited, they're going to move around a lot. So this makes it harder for the free electrons to get through without a collision. Using a formula known as Ohm's law, voltage is equal to current multiplied by resistance, which means that as long as we keep the current the same, a change in resistance will cause a change in voltage. And as temperature changes the resistance of a material, we can measure the voltage to tell the temperature. We use a material such as platinum because it has a near linear resistance versus temperature gradient. We test the material at known temperatures to obtain the graph. For example, at 0 degrees Celsius, the material will have a resistance of 100 ohms, and at 100 degrees Celsius, it has a resistance of 138.5 ohms. There are many different designs for this type, but typically they're either a film type, where the platinum is coated into a ceramic plate into a pattern and sealed in glass, or it will be a platinum wire wound around a ceramic core, again sealed in glass for protection. Okay, that's it for this video, but to continue... Okay, तो आपने देख लिया कितने प्यारे प्यारे वीडियोज़ हैं। RTDs के बारे में भी हम अब पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि RTD क्या होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपने थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व कर दिया। मतलब ये है कि मैं थोड़े थोड़े वीडियोज़ अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके। ये गूगल की है और ये आपका जो यूट्यूब है और जो साइट्स उसको दे रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल एंड आई एम थैंकफुल कि हमारे काम को थोड़ा और भी आसान कर देता है। तो कोशिश ये करो कि आदत डालो कि जो चीज़ आप पढ़ते हो फ़ौरन उसको गूगल करो, यूट्यूब पे देख लो, तो आपको वो चीज़ जो हम 1 घंटे में बार बार रोटेट करते टेप करते हैं, तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट इन फ्यू मिनट्स। आपका जो नॉलेज है वो क्या होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, पुख्ता होता जाएगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने से कि इसका इस्तेमाल क्या है, और आपका फ़िज़िक्स के साथ मोहब्बत भी बढ़ता जाएगा और बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स की वजह से दुनिया चेंज हो गई। ओके जी, नाउ कम टू रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। बेसिकली बिल्कुल थर्मोकपल की तरह ये काम करते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। The device from resistance varies linearly and uniformly with the rising temperature and vice versa is called resistance thermometer or resistance temperature detectors. Resistance temperature detectors. You have seen mercury thermometer, in which mercury is used as a thermometric substance, and temperature is measured from the expansion of the mercury up to certain limit. In a similar fashion,
there are some material whose resistance changes linearly, uniformly, predictably with the change in temperature. So the measured resistance can be used for temperature measurement. So here resistance can be used as a thermometric substance. So that is what we call resistance thermometer. So the device whose resistance varies linearly and uniformly with the rising temperature and its inverse is called resistance thermometer or resistance temperature detector, yani meaning that we can measure temperature with the help of the resistance measurement. तो resistance thermometer ऐसा thermometer है जिसका resistance linearly change होता है with increasing temperature. तो उसकी resistance measurement से हमें temperature का अंदाज़ा होता है. मर्करी थर्मोमीटर में मर्करी को एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, तो ऐसे थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस जो है एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. सो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर्स ऑफ मटेरियल्स. In such thermometer, resistance is used as a thermometric substance like mercury in or daily use thermometers. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मर्करी की तरह जो है एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस उसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका प्रिंसिपल क्या है? रेजिस्टेंस इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओवर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल. बाज़ मटेरियल का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का 200 डिग्री तक होगा तो वो 200 तक का टेम्परेचर मेजर करेगा. बाज़ का 400 तक होगा तो वो 400 तक मेजर करेगा. डिपेंड करता है मटेरियल पे. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? वर्किंग ये देखो, द सेंसिंग एलिमेंट्स ऑफ RTDs आर यूजुअली मेड ऑफ सच मटेरियल फॉर विच रेजिस्टेंस इज लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, कॉपर और निकल. ये थर्मोमीटर्स ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो लीनियरली चेंज होता है टेम्परेचर के साथ. फॉर इंस्टेंस प्लैटिनम है, कॉपर है, निकल है. द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन गिव्स अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेंसर्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अगर आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का प्लॉट ड्रा करोगे तो आपको क्या दे देता है? इट गिव्स अ चेंज इन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये चेंज इन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेंसर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर होता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है वो देता है. द रिलेटिव चेंज in temperature coefficient of resistance varies slightly over a certain range of temperature. Temperature coefficient of resistance होता है वो slightly vary करता है over a certain range of temperature. Platinum thermometer can be used. Platinum thermometer can be used for in the temperature range of -185 degree centigrade to 600 degree centigrade. -185 से 600 तक इसका टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन है. तो इसीलिए इसको इस तरह डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल RTD. इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स थर्मोमीटर कहते हैं. यानी ये थर्मोमीटर क्या करता है? इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का लीनियर रिलेशन होता है. तो रेजिस्टेंस से हम किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस thermometer. So that's all for the today's lecture.
Thank you very much.